Okay. I am your mentor for that particular full stack web development course. Okay. So as per my experience, I have near about 16 years of experience into the software industry. Okay. And as a trainer, I have near about 6 years of experience, provide the training, the different corporate batches. Okay. Corporate batches means some experienced candidate or the participant are there for that particular batch. Some fresher candidate are there. Some mixed batch are there. Okay. So the company, something like the L&T, KPIT, Eclairs, I9 Infotech, Cognizant. Okay. So as a professional experience, I am basically the consultant, that is a Microsoft consultant, as a full stack development, totally engaged into the full stack development. So full stack development, I actually covered with mainly for the .NET, but for the training, I am basically provide the Java full stack as well as the .NET full stack both. Okay, so as per the requirement. For the training perspective, in the earlier, I basically provided the .NET full stacks, web development full stack. Okay. So this contains actually, you know, the HTML5, CSS, JavaScript, or the JS, Jquery, Angular, React, all those things. And for the .NET portions, ASP.NET, ASP.NET Core, .NET Framework, for the database connectivity like the IDEO.NET, Entity Framework, all those things. And for the main stack, you can say Node.js for the server-side JavaScript coding and the MongoDB. Okay. So that is my introduction. So now, one by one, can you please tell me about yourself? Okay, and what is your interest and what is your previous exposure, if any? Then please, one by one, just start. I'm going to mute. Yeah, first start with Mohan. Are you there in the call? Mohan, hello. Mohan, can you please unmute yourself? Yeah. So Mohan, can you please introduce yourself? Basically, I am from Odisha. I have 10 years experience in teaching sector. I want to switch over the job for my career goal. So what is your experience? Sorry, I just miss out something. It's not clear for me. Education sector. Education sector, right? Yeah. Okay. Okay. So Mohan, is there any previous exposure for any programming language you have? Already I did data science course. Python I have a little bit knowledge. Okay, excellent. Okay, sure. Thank you, Mohan. Thank you. Yeah. Next, Rohit. Rohiti, right? Rohiti, right? Yes, sir. Yeah. So Rohiti, can you please introduce yourself? What is your experience, any programming language experience you have, and which state you belongs right now? Yeah, basically, I am belongs from Jharkhand, Yeah. and Okay. yeah, and like
I have to pass out BTech 2022 previous month from RTU, Rajasthan Technical University. Okay, so you have any previous exposure for the any object oriented language Yeah, or any? yeah, like only one in Python, sir. Python, Oh, HTML, CSS, and JavaScript. okay, okay, excellent. Yeah. Next, thank you, right? Thank you. Yeah, thank you, sir. Next, Shova, you can see, right? Shova. Shova, are you there? Yes, sir. Sir, I am basically from Karnataka, Belgaum, Okay. and my graduation BCA 2020. Sir, I am fresher. Okay. So during your education, you have any kind of little bit knowledge of any kind of programming language? Have you get any chance? Sir, in college, I have done one software development in Java. Okay. So that means you have little bit of knowledge of Java, correct? Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you, Shova. Upender. Yes, sir. Yeah, Upender, can you please introduce yourself? Sir, myself, Upender. Then I am basically from Sonipat, Haryana, and now I am living in Gurgaon. I had completed my graduation this year from my ITM college, and basically I learned Python as well as Linux. But Okay. Thank you, Upender. Next, Virikshetu Dikshit. Hi, sir. Yeah, hi. My name is Vrishketu Dikshit. Okay. I have completed my BTech from Civil Engineering in 2021 from So your name SGSITS is Indore. Virishketu, right? Yes, sir, Vrishketu Dikshit. Virishketu. Okay, yeah. So I completed my BTech in Civil in 2021 from SGSITS Indore, MP. And I am basically from Madhya Pradesh. Okay. And I have basically means little bit knowledge of about basics of C++. Means presently I am learning also C++. Okay. Okay, sure, sure. Thank you. And the last on the list is Virender, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Virender, can you please a little bit about yourself? Yes, sir. My name is Brain Thakur. I am basically from Madhya Pradesh, Bhopal. Okay. I completed BCA from Mhm. Makhanlal Chaturvedi University, 2012. Yes, and many diploma doing like hardware networking and PGDCA, DCA, and DOEC O level. Oh, DOEC. You are pass out in DOEC O level. Excellent. Yes, sir. Yes. Okay. So DOEC, what level? A level, right? O level, sir. O level. Oh, that is means some programming language you know already, right? Yes, sir. .NET. Oh, .NET .NET. You only know. theoretical, not practical. Okay. 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 Cool. Cool. No And problem. basically a little bit knowledge is C, C++, and HTML. Learn BCA, Okay. time duration. Yeah. Yeah. Thank you, Virender. Yeah. Okay. And from the CoachX side, I can see the two host is there. Who is there in the from the CoachX side? Viraj and Radhika, both are. Viraj and Radhika. Okay. Yeah. Okay, guys. So let me. Where is the course? Is there? So, are you aware about your TOC? That is a training content, guys. What is there in the training content and what we have to learn during the upcoming session? You are all aware, right? You are all go through your training content.
Yes, so we have gone through it. So one of the team member from the CoachX, like he has briefed us about the course content. But if you can also take us through from your side Yeah, points, yeah, yeah. that would be. Sure. So let me share my screen and please let me know whether you are able to see my screen or not. Oh, host is disabled, participant screen sharing. So can you, someone please allow me to share the screen? Uh, Viraj? I'm not able Yes, sir. to Yes, sir. share. Just doing. Yeah. You can do it right now. Please check. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Now it is. So are you guys able to see my screen? Yes, no, ha, na. Yes, we can see visible to me. Okay, it is visible, right? Yeah. So our course is basically, it is a full stack web development. Okay. So that means you are actually, after the course and after the training, you are actually expertise into the web development. Okay. So web development means you are actually web page creation and internet site creation with the help of some of basic things that is required for the front end and the back end development. Okay. So that is called the full stack web development. That is not related any .NET or the Java. Okay. So that is totally related to the some front end and totally related to the some back end. So over there, we are actually used the back end technology as, what is that? Node.js. Okay. And for the database manipulation or the storing manipulation, storing our data, we are actually use the another open source technology that is called the MongoDB. Make sense? Yes, sir. Yeah. Yes. And for the front end part, we are actually covered the HTML5. That is a very basic HTML5. Okay. We actually covered the bootstrap, this section. Okay. We also covered the JavaScript, that is a client side scripting. Okay. Then cover the JavaScript, some functions of the JavaScript, as well as some built-in functions, as well as some user-defined functions. Then the date time manipulation and the DOM manipulation object in JavaScript JS. Then after that, we have to comes in the Jquery. Okay. So Jquery, we are actually cover how to write a one Jquery syntax. What are the syntax of the Jquery? What are the content of the Jquery? Okay, what is a CDN selectors? What is a class selector, ID selector? Okay, all those things. Okay, and how we can interact with the event driven with the help of means the event driven programming with the help of Jquery. Okay, and finally we have comes in the Angular section. So Angular is very detailed manner. Okay, what is Angular? How we can set up one project in Angular? How we can create our first project in Angular? What are the file structure in Angular? What is the module? All those things. Okay, then we have comes with the Angular component, Angular templates, interpolation, model binding, all those things. Then the directives, pipe, user defined directives, then Angular from service. So for the service interaction, means the RESTful API service interaction, we are actually use the RESTful services that is called the HTTP, simple HTTP services. Okay. So we have to call or invoke those HTTP services from the Angular application, because Angular is a client side, right? It is a client side technology. It is a JavaScript framework. So we cannot create any API or the RESTful services, right? So if I want to create some RESTful services, we have to use some backend coding. Okay, so either in the .NET, either in the Java, either in the PHP or in the Node.js. Okay, we have to write the RESTful services with the help of Node.js, and we have to invoke or the call those services from the Angular. Okay, so Angular is basically act as a client side technology. With the help of Angular, we are actually making the call of the RESTful services. That is our objective. Okay.
So now next one is basically performing some create, read, update, and delete operation for the database manipulation. Okay, for the database manipulation, we are normally used either SQL Server or the MongoDB, whatever you are comfortable. Any database, the database is basically the same for everything, right? Whatever the Oracle are there, but the basic query language should be the SQL over there. But if we go for the MongoDB, that is object collection concept are there. Okay, so whatever database we have to choose, first to interact with some basic of SQL, means SQL Server or the MySQL or the Oracle, whatever. Okay, so mainly we are concentrated with the SQL, means the SQL Server or the MySQL, because MySQL is basically open source, and SQL Server standard edition, it is also the open source. Okay, next we have to use the routing mechanism, because Angular is basically the SPA. Okay, it is a single page application. Okay, so that means whenever we are actually changing one page to another page or one screen to another screen, it will not refresh the entire page. Okay, so it will not refresh the entire page. Okay, so that's why it is called the SPA. That is within the single page, we can create the multiple routing navigation, but the page, whenever we are actually navigate from one screen to another screen, the whole screen is not refreshing. That is one of the major advantage of the SPA. Okay, for the performance benefit, we are actually use nowadays the SPA application, single page application. Okay, so we will come later all those things in a detailed manner. Okay, so now the next one is unit testing. So that means whenever you write the code, okay, you write the different code, different types of code in Angular. Okay, but you need to test your what we can say, test your application, right? Test your logic, test your business. Okay, so how you can test your business or the logic? You have to write the unit test case for that, the front end unit test case. Okay, say for example, I just create one calculator program where the addition, subtraction, multiplication, division, that is a very simple example are there, right? But we have to test that what is the logic of the addition. That is, in the addition, we have to provide the two numbers. If it is a two number addition, we have to input the two numbers. That is your input. Two numbers you have to input. Okay, and you have to addition with the help of some operator, like the plus operator for the addition, right? And after that, you have to store that addition result into some resultant variable, right? So that is your logic. That is your logic for the addition. But how this logic is passed, whether you are supply the two input, whether it is addition properly, and whether it is basically compared with the actual value and the expected value. Okay, what is your actual? Say for example, 5 plus 5, it is always 10. So that means actual value should be the 10 and expected value should be the 10, right? So in that case, we say our unit test is passed. Correct. Say for example, 5 minus 2, that is subtraction, right? So we always get the result as a 3. What is your actual value? Actual value is a 3, and your expected value should be also the 3. So that means your test case is passed for the subtraction. Okay, so Angular is basically provide the collection of framework like the Jasmine, Karma, ng test. Okay, so we have to learn about those unit testing. Okay, so in the industry standard, whenever you are actually go into the industry for the future, okay, as a full stack developer, okay, so you have to, your responsibility is write the code, write proper code with the proper manner, okay, with the proper formation, as well as you have to test your own code with the help of unit testing. So we cannot skip anything in the unit testing. We have to do the unit testing. Okay, whatever the code are there, whatever your code are there, you have to look into the unit testing. So that is called the test driven approach. Test driven approach means either you can write your unit test case first, after that you can write your code basis of your unit test case or the test method. Otherwise, you can write your entire code, entire function. After that, you can create the unit test case. Okay, so either go for the code first, then go for the unit test case, or either you can go for the unit test case first, then the code first. Okay,
So now next topic is basically the Node.js. So that is the things. So Node.js is nothing. It is basically the JavaScript as a server side. So we have to learn about the introduction of the Node.js. What is that? What is the module? How we can create the module in the Node.js. Okay. If I want to create some RESTful API services, okay. So how you can go for the HTTP module. If I want to handling some file system in our disks or in our storage, we have to learn about the file system, URL module, all those things. Okay. Node package manager, events, upload files, emails. So these things are there. And obviously last one is basically interaction with your Node.js with MongoDB. Okay. So that is our TOC. I mean the content, the training content we can say. Okay. So we will cover one by one. Okay. As per the session. Sir, I have a question. Yes. Who is this? This is Sai. Sorry. My name is Sai. Actually, I couldn't introduce myself in the beginning of the call. Okay. So I come from a non-tech background field, and currently I'm a UX designer. I'm practicing UX. But as I don't have a coding skills, so how much would this course be like easier for me to like grasp the concepts from the ground level and learn everything from the beginning and build my skills in this coding area? So you said that the coding area is not very much important over here. Okay, we can learn from the very basic actually when the coding will be start. Actual coding will be start. Okay, say for example we are start the front end, right? Like starting with the JavaScript. So JavaScript is basically the client side programming language, right? So I will actually cover the how to write one JavaScript code, how to write the functions, all those things. Okay, so before that, you can Google it out. What is the function? What is the class? Okay, what is the structure? Okay, what is the object orientation? What is the function oriented approach? All those things. Okay, so during your study, all those things, if you have any doubt, you can reach out to me. Okay, so that I can taking one extra class to you. Okay, and clear your concept. Okay, got it. Yeah. What is the Vidandar? What is that? Sir, learn English and Hindi, please. Yeah, Virender, are you there? Yes, sir. Yeah, what is your problem? Sir, language, sir, not understand English. Oh, you are not comfortable with the English? Yes, sir. Yes. So you are comfortable with the Hindi? Yes, sir. Both language, sir. Okay. हाँ सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताते चले साथ में. All are comfortable with the like programming only. Programming English language. English, yeah. Okay, so what about the others? All are comfortable with the Hindi or the mixed English and Hindi? Sir, mixed English and Hindi. No, you are fine. But what about the others? I said, okay. Yeah. ठीक है, मैं मिक्स्ड करके बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ठीक है. Okay. Yeah. So I can see the another candidate. It is join participant Parvej. Right? Parvej, right? Yes, sir. Parvej, can you please close your mic? Your voice is too low actually. Parvej? Yes, sir. Yeah. So Parvej, what is your background? What is your
education, all those things. Can you please? My education बीकॉम है सर अपना, बीकॉम और पीजीडीसी, बीकॉम आईटी और फील्ड से पीजीडीसी। जी अच्छा जी अच्छा, ओके ओके। तुमने बीकॉम पास आउट किया, उसके बाद जी जी पीजीडीसी किया, राइट? जी जी। ओके। सो आईटी का कुछ नॉलेज है तुम्हारे पास, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, ऐसा कुछ नॉलेज है? नहीं 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 सर, इसका नॉलेज नहीं है। ओके ये कोर्स छूट गया था, पीजीडीसी में था लेकिन हमसे छूट गया था क्लासेस का। जी। ओके ओके। अब बाकी सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भेलपुरी बन जाएगा बाबा। जी सर। तो ये भेलपुरी बन जाएगा ऐसा नहीं, ये तो ठीक है सर, थोड़ा समझने लायक, क्या कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना सर। नो इशू, मैं मिक्स जी करके जी बताता सर। हूँ, ठीक है? जी सर इंग्लिश भी जी सर। रहेगा और हिंदी भी रहेगा, जी जी ठीक है? जी जी सर। जी सर। ओके ओके सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Okay, so any doubts guys according to the course content, means the training course content? कोई difficulties है क्या? है तो बताओ मुझे। सर दिस साइड ऋषिकेश। हाँ वृक्षित बोलो। सर मुझे काउंसलर के द्वारा बताया गया था कि रिएक्ट दिया जाएगा, मतलब मैंने एंगुलर Okay. के लिए रिएक्ट रखा था, क्योंकि अच्छा। बेसिकली मन पे फोकस था मेरा। अच्छा, क्या तो रिएक्ट मिलेगा? Brikshit, why you are want to choose the React? Is there any specific reason? सर डिमांडिंग अभी सर मन की ज्यादा चल रही है, इसलिए मुझे लगा शायद मन मुझे सीखना चाहिए। नहीं, मैं अगर तुमको बताता हूँ डिमांडिंग में अभी मार्केट में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नियर अबाउट 16 years, okay, so I am basically work into the as a consultant, okay, in the different companies, okay, so मैं तुमको बताता हूँ डिमांड में अभी हाईएस्ट डिमांडिंग इज द एंगुलर, नॉट द रिएक्ट। ओके ओके, सो रिएक्ट का भी डिमांड है, बट रिएक्ट का डिमांड इज वेरी स्पेसिफिक टू सम ऑफ द इंडस्ट्री। लाइक तुम अगर बैंकिंग फिनेंस में काम करोगे, जैसे बैंक हो गया, लाइक एसबीआई का हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, so those companies is basically create their own framework, okay, so what they do, they actually inherited some what you can say, they actually do some inherited some component with the help of React.js, okay okay, and do their own। वो क्या करता है, React.js का कंपोनेंट को इनहेरिट करते हैं, मतलब React.js को इनहेरिट करके खुद का कंपोनेंट बना के यूज करते हैं, ठीक है? ओके, सो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए React इज फाइन, बट इफ यू नो द एंगुलर easily learn the React, or if you know the React you can easily learn vice versa, but I can say React is a JavaScript library, okay, like Jquery is a JavaScript library, okay, but Angular is a framework, it is a vast, Angular is a very vast, okay। सर एंगुलर डेफिनेशन सर? Angular definition मतलब सर मतलब किस लिए यूज किया जाता सर वो? हेलो
Hello, Rana sir. Hello, sir. Sir must be rejoining, guys. It seems to Hello. be an internet issue. Sir is rejoining. Okay. Yeah. Hello. Hello. Yes sir. या सॉरी पावर चला गया था शायद, सो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क से। अभी सुन पा रहे हो ना सब मुझे? यस सर। हाँ यस। हाँ, कोई बोल रहा था मुझे एंगुलर का डेफिनेशन क्या है, कोई राइट? हाँ सर, लाइक मतलब HTML पेजेस बनाने के लिए डिजाइन करते हैं, मतलब वेब पेजेस के लिए। CSS डिजाइनिंग के लिए, मतलब उसमें कलर फॉन्ट वगैरह होता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के लिए होता है। तो एंगुलर और जो आप बता रहे हैं दूसरा एक वो फंक्शंस की बात कर रहे थे, दो लैंग्वेज आप बताइए वो किस लिए यूज होता है? एंगुलर का मतलब मीन्स क्या यूज होता है? पेजेस के अंदर कुछ फंक्शंस चलाने के लिए, या कुछ क्लाइंट साइड से या सर्वर साइड से डेटा उठाने के लिए, वो किस लिए? May I know who is speaking right now, talking right now? Yes sir. What is your name? वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र। ओके वीरेंद्र, तुम बोल रहे हो एंगुलर का यूज क्या है, राइट? हाँ सर। ओके, नो वरीज, मैं वन बाय वन कवर करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। अरे ये पावर जा रहा है आ रहा है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई विल कवर वन बाय वन। अगर कुछ कोई भी डाउट होगा तुम लोगों को, इफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो एंड स्टॉप मी। ओके, एंड प्लीज लेट मी नो, ठीक है? कोई भी डाउट होगा, ठीक है? और एक चीज बता देता हूँ पार्टिसिपेंट को, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा है सर वैसे। इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छा सर, इंग्लिश तो है ही। ठीक है, चलो ठीक है, शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज विजिबल राइट टू ऑल? Yes sir. Okay, so let me open one notepad. And by the way, सबको गणेश चतुर्थी की आर्थिक बधाई। जी सर, आपको That is a belated happy गणेश चतुर्थी to all. सर आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। हाँ, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा पूजा हो रहा था आज, तो इसलिए मेरा डिले हो गया ज्वाइन करने से। Okay, so first we have to learn about the HTML. Okay, HTML5. So HTML5 is what? It is a updated version of HTML. Okay, मतलब एकदम लेटेस्ट वर्जन है HTML का, अपडेटेड वर्जन, यू कैन से दैट इज लेटेस्ट एडिशन फॉर द HTML. Okay, so HTML में is basic what? HTML is what? HTML is basically we can say hyper, बोलो? hypertext markup language. Correct, hypertext markup language. ठीक है? तो why yeah, thank you. So why it is called hypertext markup language, guys? Any idea? Anything you have your mind, just tell me, no problem. Sir, create a web page, not a programming language. Yes, I can say. Very good. Okay, I just write your point, no problem. Create a web page. Thank you. Okay, one thing we have to know, एक चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा, what is a web
page and what is web site or web application. ठीक है. So before that, creating the web page or create a web page, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा what is a web page, what is web page and what is website or the web application. Okay. अच्छा, और एक चीज सबको मैं बताते हूँ, क्लास जब होगा, सेशन जब होगा, प्लीज इंटरेक्ट. ठीक है. Because interact is a best policy to share the knowledge to each other. Okay. Agree, guys? All? Yes, sir. Because देखो, ऑनलाइन सेशन हो रहा है. ठीक है. एक तो ऑनलाइन सेशन है, इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है ऑनलाइन सेशन, बट हम लोगों को जितना करना है वो कर लो इंटरेक्शन. ठीक है. तब नॉलेज ज्यादा शेयर होता है. मुझे जो नॉलेज है मैं तुम लोगों को शेयर करता हूँ, तुम लोगों का जो नॉलेज है तुम लोग भी मुझे शेयर करो. वॉट एवर, रॉन्ग हो ठीक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बिकॉज वी आर द लर्नर हियर, वी हैव टू लर्न, वी आर नॉट एक्सपर्ट येट. Okay. Okay. Okay, sir. Don't silent, just share your knowledge, whatever you know. ठीक है. जो भी तुम लोगों को पता है वो शेयर करो. ठीक है. जो भी. ओके. चलो, तो कोई मुझे अब बताओ, कैन समवन टेल मी व्हाट इज अ वेब पेज एंड व्हाट इज अ वेबसाइट और द वेब एप्लीकेशन. कोई भी पार्टिसिपेंट में, जितना पार्टिसिपेंट है कोई भी एक मुझे बताओ. ट्राई करो, नो प्रॉब्लम. Anyone wants to tell something about the web page or the website? सर वेबसाइट के बारे में मैं बताऊं? हाँ बताओ. श्योर. वेबसाइट वी कैन से लाइक अपन जैसे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जो भी अपन टाइप किए वो सर्वर पे जाके पहले कनेक्ट होता है और फिर वहां से मतलब जो भी अपन सर्च किया है वहां से जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन वहाँ अगर होगी तो वहां से अपन के पास उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपन के पास आती है. और वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एज अ मतलब वेबसाइट के अंदर इमेजेस भी अपन ने देखी हैं, जैसे इमेजेस भी रहती हैं, टेक्स्ट भी रहते हैं, कलरफुल बैकग्राउंड्स भी रहते हैं, और एनिमेशंस भी रहते हैं. अपन ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों का मिक्सअप होके जो आता है अपन के पास वो एक तरह से वेबसाइट का कॉम्बिनेशन रहता है. Yes, correct. So as per your things, you said web page is a internet, sorry, website you said, right? Website, huh? Yes sir, website. Yeah, it is an internet application, we can say like that, correct? Internet application बोल सकते हैं, right ना? हाँ, because it is basically running in the web, right? Web पे चलता है, right? Yeah. तो web में मतलब web मतलब क्या है? Internet application, simple, right ना? Yes. Yeah. अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये इंटरनेट एप्लीकेशन को चलाने के लिए, if I want to run the internet application, उसके लिए मुझे क्या चाहिए कंप्यूटर में? Yes, very nice. Browsers. Very nice. Right, like Internet Explorer, Mozilla, Firefox. Correct. IE और Mozilla. Google Chrome. Okay. Another is the Edge, right? Microsoft Edge, correct? Yes, Microsoft Edge. Safari, we can say, right? Safari for the iOS application. Opera Mini, sir. Huh? Opera Mini. Opera Mini. Very nice. Yes. All are very good. Good. I'm very much impressed. Very nice. Sir, what is the difference between a website and a URL? Yeah, I'll come.
ओके, सो वेबसाइट इंटरनेट एप्लीकेशन जिसको रन करने के लिए वी हैव टू नीड टू यूज द ब्राउजर, राइट, इन आवर computer as a user, right? Yes. As a user. ठीक है, तो अभी एंटिटी दो होता है, राइट? यूजर और क्या बोल सकते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, राइट? वेब प्रोग्रामर, राइट? वेब प्रोग्रामर जो अभी तुम लोग बनोगे सीखने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, करेक्ट ना? Or you can say web developer. वेब डेवलपर, या वेब डेवलपर, वेब डेवलपर, यस, वेब प्रोग्रामर और डेवलपर, ठीक है? अभी यूजर को क्या चाहिए बाबा? कंटेंट, यूजर को चाहिए ब्राउजर, राइट? यस, ब्राउजर, ब्राउजर खोल के क्या करेगा? ओपन द ब्राउजर, खोल के क्या करेगा? कंटेंट देखेगा, राइट? सीधा कंटेंट, वेबसाइट, हाँ, सीधा कंटेंट, ठीक है? अभी वेब में, वेब पेज में या वेबसाइट में कंटेंट क्या क्या होता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है सर, ऑडियो एक्सेट्रा, और बहुत कुछ हो सकता है, राइट? एनिमेशन, यस यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यस। ठीक है? अभी तुम लोग जब वेब प्रोग्रामर या डेवलपर बनोगे या सीखोगे इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर सेशन में, डिफरेंट सेशन में, ठीक है? अभी तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ? तुम लोगों को भी ब्राउजर चाहिए ना बाबा? यस सर, जो यूजर को चाहिए वो हम लोगों को भी चाहिए। नहीं, तुम लोगों को ये, होल्ड ऑन, तुम लोगों को ब्राउजर चाहिए किस लिए? टू रन द एप्लीकेशन, करेक्ट? एप्लीकेशन को रन करने के लिए, करेक्ट? ठीक है? और तुम लोगों को और एक चीज चाहिए, एडिटर चाहिए एक, ठीक है? बिकॉज यू आर द प्रोग्रामर, तो तुम लोगों को प्रोग्राम लिखने के लिए एक तो जगह चाहिए ना, ठीक है? हाँ, दैट इज कॉल्ड द एडिटर, ठीक है? तो एडिटर कुछ भी हो सकता है, नोटपैड यूज करो, नोटपैड, वीएस कोड एडिटर, वीएस कोड, वीएस कोड एडिटर, जावा के लिए एक्लिप्स यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। विजुअल स्टूडियो, ठीक है? ये हो गया तुम लोगों का वेब प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, ब्राउजर, यूजर, ठीक है? दो एंटिटी डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो अभी तुमने तो पेज डेवलप कर दिया, ठीक है? तुमने एक पेज तो बना दिया, यू आर एक्चुअली डेवलप्ड वन पेज, ओके? सो नाउ हाउ you can run that page into the internet. अभी पेज को तो इंटरनेट में रन करना पड़ेगा, ब्राउजर में रन करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, ठीक है, करेक्ट ना? यस सर। तो ब्राउजर में रन करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? लोकल सेव करोगे, लोकल सेव, यस सर, ठीक है, राइट? लोकल में सेव करोगे। लोकल में सेव करने के लिए तुमको क्या बनाना पड़ेगा कंप्यूटर में? बोलो बोलो बोलो। लोकल सर्वर। सर्वर, व्हाई सर्वर इज कमिंग ओवर द पिक्चर? लोकल सेव रे बाबा। लोकल सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोग? सर एक्सटेंशन यूज करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब एक बोलो ना बाबा, फाइल बनाना पड़ेगा, सिंपल फाइल बनानी पड़ेगी। यस, so we have to create the file, we have to create the file, ठीक है? तो अगर तुम HTML करोगे तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा? HTML फाइल्स बनाना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर, ठीक है, आइदर फाइल बनाना पड़ेगा या फाइल्स बनाना पड़ेगा, करेक्ट ना? यस सर, ठीक है। सिंगल पेज वन फाइल, मल्टीपल पेजेस फाइल्स, यस सर। ठीक है, तो जब मल्टीपल पेज और मल्टीपल फाइल्स बनेगा तो एक जगह पर जाके उसको रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द वेब एप्लीकेशन, ठीक है? इट इज अ स्टोरेज वेयर
we can store the web file. बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है यार, कुछ कोई तो अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दो अगर बात नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है. So storage, where we can store the web files, correct? Web application. Got it? Sir. ठीक है. अभी तुमने तो स्टोर कर दिया, ठीक है, उसको स्टोर कर दिया, ठीक है. अभी देखो सिंपल थिंग्स में बताता हूं, ठीक है. चलो एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं. नोटपैड ओपन किया, दैट इज माय एडिटर राइट नाउ. ठीक है. तो सिंपल एक हेडिंग दिया मैंने, h1 is a head tag in HTML, that is a simple HTML heading. ओके. तो इधर हेडिंग के अंदर मैंने लिखा this one, this is simple एक टेक्स्ट लिखा, और हेडिंग it is a tag, HTML tag, so it is basically start and that is your end, correct? so अभी इसको मैंने सेव कर दिया, इधर सेव करते हैं. चलो test.html, because we are actually creating the HTML, so file extension should be the HTML or HTML whatever. ठीक है. चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ एक जगह पर डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है. डेमो के अंदर एक फोल्डर है मेरा डेमो करके ऑलरेडी. चलो इधर ही सेव कर देते हैं, सेव इट. ठीक है. अभी इसको बंद कर दिया, इसको मिनिमाइज किया, ठीक है. चलो डेमो फोल्डर ओपन करते हैं अभी. तो मैंने सेव कर दिया, फाइल बना दिया, एक पेज बन गया मेरा छोटा सा, ठीक है. डेमो करके एक फोल्डर में मैंने इसको सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, और फाइल का नाम है टेस्ट, और इसको मैंने ओपन कर दिया, करेक्ट. चलो जब भी मैं देखो ओपन करता हूं तभी मेरा मतलब different kinds of applications are there where you have to open your file. Okay, so if you open the Firefox, Chrome or the Edge, so I just open into the Edge. Okay, so it will run, ठीक है. it will run the application, एप्लीकेशन को रन कर दिया, ठीक है. बट हाँ, तो एप्लीकेशन यूआरएल देखो, दैट इज अ यूआरएल पोर्शन, राइट. तो यूआरएल में क्या आ रहा है, सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर राना सी के अंदर वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप के अंदर डेमो के अंदर टेस्ट.html, करेक्ट. तो ये जो अभी फाइल रन हो रहा है, ठीक है, दिस फाइल इज रनिंग इनटू द लोकल, करेक्ट. ये लोकल में रन हो रहा है ना मेरा. यस सर. यस सर. यस सर. तो बाबा कोई भी जगह पर डाउट होगा तो मुझे पॉज कर देना, ठीक है. और हम लोगों को डाउट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा नहीं मैं बोलते ही जा रहा हूँ और तुम लोग सुनते ही जा रहे हो, बट तुम लोगों का दिमाग में बहुत सारा डाउट आ रहा है, बट तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो मुझे प्लीज पॉज कर देना, ठीक है. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज और एक बार रिपीट कीजिए. ओके. तो अभी ये फाइल को मैंने सेव कर दिया. हाँ, ये फाइल को मैंने सेव कर दिया और इसका आउटपुट ऐसा आ गया मेरा. दिस इज माय फर्स्ट सेशन, ये मैंने लिखा था एज h1. सो h1 स्टाइल एक टैग में आ गया, h1 स्टाइल में आ गया. इसको अगर तुम राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके तुम बोलोगे व्यू पेज सोर्स, तो इसका सोर्स तुमको मिल जाएगा, HTML का सोर्स, ठीक है, करेक्ट. ये सोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है. और ये तुम्हारा ब्राउजर पे रन. ओके. तो अभी जो ब्राउजर में रन हो रहा है ना, ये वाला पेज देखो, ब्राउजर में सी ड्राइव से रन हो रहा है ये वाला पेज, करेक्ट, ठीक है. मतलब मेरा लोकल में चल रहा है. दिस पेज इज रनिंग इन माय लोकल, नॉट इन द सर्वर. सर्वर पे नहीं चल रहा है, ये लोकल में चल रहा है, करेक्ट. गॉट इट ना. यस सर. यस सर. ओके. वन मोर डाउट. यस. कि अगर लोकल पे हो, मतलब अपने सिस्टम में जैसे आपने अभी सेव किया वैसे लोकल में हो या फिर सर्वर में हो, दोनों ही इंटरनेट के थ्रू ही चलेंगे ना.
नहीं, लोकल में चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम माई लोकल, राइट? तुम अगर वर्ड में एक फाइल बनाओगे और फाइल बना के तुम लोकल में सेव कर दोगे, इसको खोलने के लिए इंटरनेट की जरूरत है क्या? बताओ मुझे। नहीं सर, लेकिन अपन वो ब्राउजर में नहीं खोलते, ये अपन ने ब्राउजर में खोला है। तो क्या हुआ? क्यों इंटरनेट की जरूरत है बोलो? लोकल है ना, लोकल में चल रहा है ना इंटरनेट। ओके, करेक्ट। ओके ठीक है, अभी मुझे ये बात बताओ, एक पेज, अभी मैं पाथ तुम लोगों को शेयर करता हूँ। किधर गया है जूम यार, स्टॉप करता हूँ, किधर गया चैट? ये मेरा पाथ है, ठीक है? अभी ये पाथ तुम लोगों को मैंने शेयर किया, ठीक है? आई विल शेयर दैट पाथ। कैन यू रन दैट HTML फाइल इन योर ब्राउजर? पॉसिबल? यस। ए बाबा, कौन बोला यस? नो सर। नो सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। करेगा सर ये? हाँ, one by one I will answer all the doubts, no problem. I am here only, that's why. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, देखो चैट, देखो चैट में दिया है मैंने एक पाथ। नहीं रन होगा सर। हाँ, चैट ओपन करो, चैट में देखो एक पाथ दिया है मैंने, फाइल कोलोन स्लैश 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 सी ड्राइव यूजर राना सी ऑल दिस थिंग्स। तो ये पेज जो मैंने बनाया, ये पेज क्या तुम लोग ब्राउजर में देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, ये मुझे बताओ। नो सर। नो सर। वेरी गुड। Why no? Because the pathway that in your system or in the storage is not the same in my system, sir. Because it is my path na. Yes sir, your It pathway, is my not path my na. path. C drive Rana C user, it is my path, my Yes, file sir. path. How you can run the application in your browser? ये तो मेरा एप्लीकेशन है ना सर, क्योंकि वो सर आपका लोकल पे चल रहा है ना लोकल में सर। सेव है, लोकल में चल रहा है। यस, सो Yes, sir. लोकल में चलने के लिए अभी चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. लोकल में चलने के लिए, लोकल में चलो पाथ को कॉपी करते, कंट्रोल सी मारते और इधर डालते हैं, ठीक है? हाँ, तो लोकल में चलने के लिए जो प्रोटोकॉल आता है ना, प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द फाइल प्रोटोकॉल। इट इज कॉल्ड द फाइल प्रोटोकॉल। Okay. ओके, Yes. तो अभी चलो और एक टैब ओपन करते हैं इधर से, इधर लिखते www.google.com, ठीक है? अभी मुझे बताओ, ये www.google.com मैं भी देख सकता हूँ, तुम भी देख सकते हो, राइट? यस सब सर। देख सकते हैं? सर। सर। यस सर, ओके। अभी मुझे बताओ, why it is visible to all? Because it is not saved in the local, it is on the server. Yes, सर्वर पे। correct, Yes, sir. it is in the server. चलो इसको कॉपी करते हैं पाथ को, गूगल का। ठीक है, तो अभी फाइल की जगह पर क्या आ गया? कौन सा प्रोटोकॉल दिख रहा है मुझे? HTTP. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S for secure, secure protocol, ठीक है? It can be HTTP or HTTPS, whatever, ठीक है? If it is a secure then HTTPS, if it is a not then the HTTP, ठीक है? ओके, तो मेन कंक्लूजन क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं अपन? मतलब एक अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। एक वेबसाइट को रन करने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? बट वेबसाइट को देखने के लिए, डेवलप करने के बाद देखने के लिए अगर HTML है तो, ठीक है, तो सर्वर की कुछ जरूरत नहीं है। बट उसको अगर शेयर करना है, इफ आई वांट टू शेयर माय वेब पेजेस और माय वेब एप्लीकेशन इनटू द यूजर, ठीक है, तो उसके लिए तुमको वेब पेज को और वेब एप्लीकेशन को सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। यस सर। You have to host your web application into the server. But when you have to develop that web page, no need to use any server. Correct? If you want to create some HTML page,
then no need to I mean host into the server. But if you want to share your page into the internet application or the different user in the globe wide, in the global manner, you have to install you have to host that page into the server. Is that clear? Makes sense? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So मैं बताता हूँ for development, if it is not server side, then no need to install any web server. Okay, for the development. But if you want to share the web page in internet, you have to deploy or host into the server. सबको मैं शेयर कर देता हूं जो मैंने लिखा. तुम किसी जगह पर इसको छोटा छोटा करके नोट बना के रखो, ठीक है? तो बाद में तुमको ही हेल्प, तुम लोगों को ही हेल्प होगा. जस्ट क्रिएट सम नोट्स लिटिल बिट, और माइंड में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है? Is that clear, everybody? Any doubts, any confusion as of now? Yes, No? sir. तो हम लोगों को जो प्रोटोकॉल चाहिए, either HTTP or HTTPS, correct? If it is a secure, then it is a HTTPS. If it is a normal, not secure protocol, it is a simple HTTP. Okay. So HTTP request process and HTTP response. Okay, what is that? Server life cycle. That is a simple server life cycle. Got it? तो सर्वर पे तुम अगर कोई पेज को होस्ट करोगे, इफ यू वांट टू होस्ट सम पेज इनटू द सर्वर, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to do the HTTP request with the help of browser. तुमको HTTP request create करना पड़ेगा browser open करके, and after that it will actually invoke one server, web server, that is called the web server. Web server को invoke करेगा, web server कुछ sometimes process करेगा, process करने के बाद तुमको return response करेगा. ठीक है? So like google.com तुमने दिया, मतलब मैंने ब्राउजर बंद किया, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, एक टैब ओपन किया, over here I type the google.com. So whenever you hit the enter, it is basically request and process to the server, and finally server return the response. Server return the response. Okay, correct? So if you right click on the browser and click on the inspect, that is the inspection, inspect element. Okay, and if you go on the
network. Okay, so if you hit the google.com, okay, so that is the fetch XHR, that is your response from the console. Sir, you are sharing your screen. Oh, I'm not sharing. No, sir, your screen not visible. Okay, sorry, something wrong maybe. Now you are able to see my screen. Yes. Yes. So whenever you type the google.com, okay, in the browser, okay, so it is basically provide the some server life cycle. So that means first we are actually create the request with the help of HTTP protocol. Then this page is basically invoke the server site, that is a web server, and after that we get the response from the server. ठीक है, तो सर्वर का लाइफ साइकिल क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, मे बी इफ इट इज अ सर्वर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर, तो कुछ प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस होने के बाद सर्वर तुरंत तुमको रेस्पॉन्स करेगा, सर्वर तुरंत तुमको रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सपोज मैंने और एक टैब ओपन किया, याहू yahoo.com ओपन किया मैंने, ठीक है। So Yahoo is another search engine. Similarly देखो, HTTPS request इंस्पेक्ट करोगे तो तुमको एलिमेंट्स में जो तुम्हारा कोड है, क्लाइंट साइड जो कोड है वो तुमको दिखेगा. यू आर गेटिंग द क्लाइंट साइड कोड. इफ यू right click and the view source page, you get some of the code like the title, meta tag, all those things, okay, and your JavaScript, all those things. So that is your elements inspection, okay. So you can inspect your elements something like that. ऐसे तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंसोल में कुछ भी कोई एरर होगा या कोई पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, वो तुमको दिखाएगा कंसोल में जाकर, ठीक है। सोर्स में व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट देयर, व्हाट आर द फाइल्स आर देयर, दैट यू कैन सी इनटू द सोर्स, ठीक है। नेटवर्क में तुमको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स दिखाई देगा, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज योर रेस्पॉन्स, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज योर रेस्पॉन्स, दैट विल बी go for the network tab, ठीक है। So as per the developer perspective, जब तुम पेज को डेवलप करोगे, जब तुम कुछ हद तक सीख जाओगे, you have to use the inspect element, ठीक है। ब्राउजर में ब्लैंक सेक्शन में राइट क्लिक करके लास्ट जो आता है ऑप्शन, that is called the inspect. So inspect में there are so many things are there, elements. I will come in brief of the later, okay. नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन कैशे क्लियर, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये तुमको जानना पड़ेगा, बिकॉज you are actually designing the web page, you are actually creating the web page, you are actually interacting the web page, as well as you have to host the web page into the website, okay. ठीक है, तो हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, सर्वर लाइफ साइकिल मींस HTTP रिक्वेस्ट, then some process is optional, process is also required for web scraping. Sorry, web scraping, yes. And after that you get the HTTP response, but HTTP request response तो रहेगा, it is always there, ठीक है, okay. तो हम लोग वेब पेज को where we have to host our web pages होस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बोलो, वेब सर्वर, एटलीस्ट वन वेब सर्वर तो चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम करोगे, माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर मतलब विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वेब सर्वर क्या नाम है, IIS, ठीक है। अगर तुम जावा में काम करोगे तो जावा का एक वेब सर्वर है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड द टॉमकैट, ठीक है, एपाची एक्सेट्रा, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर, ठीक है। तो अगर तुम विंडोज में काम करोगे तो तुमको IIS यूज करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में,
अगर तुम मैक में काम करोगे या लिनक्स में काम करोगे या यूनिक्स में काम करोगे तो तुमको टॉम कैट, या विंडोज में भी टॉम कैट चलता है, नो इशू, बट अपाची इज बेसिकली यूज्ड फॉर द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो IIS is for the Windows. Okay, Tomcat is support for the Windows as well as the Linux. I mean the Unix or Linux. And Apache is dedicated for the Unix or Linux. Is that clear to everybody? मैं थोड़ा सा चैट में डाल देता हूँ ये, जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन. ठीक है, अभी मुझको बताओ कोई डाउट, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. ओके, स्टॉप शेयरिंग. एनी डाउट? What is the difference between client side and server side? या आई विल कम. नहीं, अभी जितना दूर मैंने पढ़ाया, जितना दूर दिखाया, as of now, if there are any doubt, any confusion, like the interaction, local server, all those things? No. No. What is the IP address? I'll come. What is IP address? What is the protocol? All those things. ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा 5 मिनट थिंक कर लो, थोड़ा सोच लो, थिंक अबाउट इट, जितना दूर मैंने पढ़ाया. ठीक है, मैं 5 मिनट तुम लोगों को समय देता हूँ. ठीक है, कुछ भी डाउट होगा, जो जितना दूर पढ़ाया उसका बाहर मत जाओ, और जितना कंटेंट मैंने समझाया उसका बाहर मत जाओ. ठीक है, उसमें से ही थिंक करो, एंड आफ्टर 5 मिनट्स लेट मी नो. ओके, कूल, फाइन. या सर. हाँ सर, जो आपने बताया था HTML5 जो कि अपडेटेड वर्जन है HTML का, तो सर मतलब अपडेटेड वर्जन तभी निकालते हैं ना जब कोई बग्स रह गए हो या फिर कोई दिक्कत आ रही है पिछले वाले में, या इम्प्रूवमेंट. नॉट ओनली बग्स के लिए नहीं है अपडेटेड वर्जन, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, अपडेटेड वर्जन कब निकलते हैं? जब मुझे वर्जन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंशन फॉर द सम प्रीवियस वर्जन. मतलब प्रीवियस वर्जन में कुछ फीचर्स था, नहीं था, अभी इस वर्जन में नया फीचर्स वो डाल दिया. तो कौन से फीचर्स? बहुत सारा फीचर्स है. आई विल कम लेटर. व्हाट इज द बेस्ट फीचर्स आर देयर इन द HTML5? okay, what are the changes in the meta tag, what are the new tags are there, lots of things are there, new things are there. ठीक है, तो सर अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन HTML5 ही यूज कर रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए तुमको और कुछ टैग सीखना पड़ेगा. there are so many tags, new tags are there, new meta tags are there also. ठीक है, वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा. ठीक है, टैग्स इंक्लूड हुए इसमें? हाँ, न्यू टैग्स इंक्लूड हुए ना? हाँ, न्यू टैग्स इंक्लूड हुआ, न्यू मेटा टैग इंक्लूड हुआ, मेटा फॉर्मेट इंक्लूड हुआ. ठीक है, W3C का स्टैंडर्ड इंक्लूड हुआ, एक्सेट्रा. W3 मतलब क्या? Web3? Web3, करेक्ट. W3 कॉन्स्ट्रोड हुआ, या स्टैंडर्डाइजेशन. या ओके, सो प्लीज थिंक अबाउट द 5 minutes. ठीक है, आई विल कम बैक इन 5 minutes. ओके,
Teacher, Microsoft. ಅದನ್ನೇ every day. Webinar ఉంటుంది. మొబైల్ एक क्लिक पूछो एड कर ले आएगा टाइम मतलब तो भाई टाइम क्लियर है कितना अटेंड करने है वेबिनार करते हैं अटेंड कर दिया क्या ना ये कमेंट लगी देखो ना माई जो जाएगी देखे प्लान करके देख लेना प्लान कर माई जो जाएगी देखी तो देखी यार ऑप्शन तो प्लान तो सब तो बट करा दो ये प्लान करेगी 39 अभी लाएगा
Hello. Hello. Yes, sir. Okay, I'm back. So guys, any doubt, any confusion? Shova, Virender, Mohan, No doubt, sir. all Hello. are clear? Yeah, yeah. Yes, sir. What is a hyperlink? Hyperlink. Yeah. Hyperlink is basically one tag in HTML. Okay. Over the Yeah. hyperlink, we are actually creating the navigation from one page to another page. Redirection, we can say. So is there any command to detect how many pages in a how many web pages in a website? Hmm? How many web pages in a website? How many web pages in website means I can't, it does not make sense to me what you are saying. In Like a website, you can, in a website, you can, yeah, in a every website, website you can put, hold on. In a website, you can put the multiple pages, multiple HTML pages. It can be the HTML pages, it can be the JavaScript, it can be the Jquery, whatever. You can put multiple things. Okay. So in a website or in a web application, you can put the multiple web pages. There are no restriction at all. Okay. So hyperlink means it is basically one linking. So that means if I want to navigate one page to another page, we need to use the hyperlink. We need to use the hyperlink. Okay. Say for example, for this one, I actually create one page, right? Test one. Okay. So how we can make the hyperlink? We have to use the anchor tag, and that is attribute. Okay. So I wants to link with the google.com. Something like that. Okay. So that is your URL. Sir, it's being shown here. Oh, sorry. Yeah. Now you are able to see my screen, right? Yes. Go. Something like that. Okay. So it is a basically hyperlink tag. This is a tag name A. Okay. And that is the attribute. That is the property href, and that is your URL. You wants to navigate from your web page to the google.com, and that is the anchor text which actually display on your browser. जो browser पे display होगा, ठीक है, और anchor close हो गया, ठीक है. So all HTML tags are the predefined, ठीक है. All tags are the predefined. कोई tag तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, सारा tags libraries में है, तुमको just use करना पड़ेगा उसको, ठीक है. ठीक है. As a programmer, as a developer, you have to use all the HTML tags, ठीक है. तो अभी ये चेंज करने के बाद मैं इसको सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया, बंद करके if I want to open it with the Chrome or the Edge, whatever it is, you get one link, right? So that is a hyperlink. Okay. So whenever you click that particular link, it will automatically navigate google.com. So that is a use of hyperlink. So that means within the web application, if I want to navigate one page to another page, or if I want to redirect one page to another page, okay, so you have to use the what? Hyperlink. Is that clear? Make sense? Yes. Yeah. So no worries, guys. I will come one by one. Okay. So अभी जितना दूर पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? नो सर, नहीं.
सो देखो अभी मेरा जो HTML फाइल है, ये टेस्ट वाला जो HTML फाइल है, HTML sorry test.html जो फाइल है, this HTML file contain the h1 tag, okay, and one link is there that is called the go, correct, and that is working on right now in the local. That is working in right now in the local. Okay, so now if I want to share that particular page for the global user or the web user, ठीक है, इंटरनेट में अगर तुमको शेयर करना है, जो इंटरनेट वाला यूजर है वो अगर तुम्हारा पेज यूज करना चाहता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, यू हैव टू होस्ट दैट पेज इनटू द वेब सर्वर, करेक्ट, यू हैव टू होस्ट दैट पेज इनटू द वेब सर्वर. ओके, सो वेब सर्वर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंस्टॉल द IIS इन योर लैपटॉप. ठीक है, तो तुमको IIS मतलब विंडोज अगर तुम्हारा लैपटॉप में है तो विंडोज लैपटॉप में IIS करके एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है विंडोज के अंदर. ठीक है, उसको तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, देखो, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड IIS. ठीक है, सो हियर आई ओपन द IIS एंड ओवर देयर you have to create the site. You have to create the site. After that you can host your page. Say for example my site 1 करके मैंने एक ऑलरेडी बनाया है इधर. ठीक है, तो इसको अगर तुम एक्सप्लोर करोगे, so that my site 1 contain the different web pages, different things are there. ठीक है, तो इसको अगर तुम ये फ्रॉम करके जो पेज है, HTML पेज है, इसको अगर तुम ओपन करोगे लोकली, ठीक है, तो अभी देखो ये फ्रॉम किधर से रन हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर ASP करके एक फोल्डर है, from.html रन हो रहा है. ठीक है, अभी देखो पाथ को याद रखो, दैट इज राइट नाउ लोकल, दैट इज राइट नाउ लोकल. ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू रन द माय साइट इनटू द ब्राउज, IIS में अगर तुम रन करोगे इसको, अगर तुम ब्राउज करोगे, ठीक है, और इधर अगर तुम लिखोगे from.html, ठीक है, तो अभी देखो ये किधर रन हो रहा है, तुम्हारा लोकल होस्ट में रन हो रहा है. ठीक है, लोकल होस्ट. Is it a paid or free? No, it is a free open source. It is a free. It is an extra component is under the Windows. You have to install it. Okay, so I will let you know guys later how you can install the IIS and all those things whenever you comes into the web development. For the coding and the hosting, there is a different thing. So after कोडिंग यू हैव टू होस्ट योर पेज. मतलब कोडिंग करने के बाद तुमको पेज को होस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट. तो होस्ट करने के लिए तुमको एक वेब सर्वर तो चाहिए. विंडोज में अगर तुम काम करोगे तो विंडोज के लिए IIS तुमको कंपोनेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, ठीक है, तो अभी देखो ये दो पेज में फर्क क्या है. एक मेरा लोकल से चल रहा है, देखो इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और नोटपैड में रखता हूँ तो तुमको डिफरेंशिएट पता चलेगा. ठीक है, तो ये देखो फाइल में आ रहा है और सी ड्राइव दिख रहा है इधर, मतलब मेरा ड्राइव से चल रहा है. ठीक है, अगर इसको तुम दूसरा जो टैब मैंने IIS ओपन किया, इसको होस्ट करने के बाद ओपन किया, इसको अगर तुम देखोगे तो इधर किधर आ रहा है, लोकल होस्ट में आ रहा है. ठीक है, ASP active server pages. No, that is not. What is the page? HTML page are there, right? ये HTML पेज ही है ना. ASP करके एक फोल्डर है, इसमें मैंने बनाया. हाँ, सी ड्राइव के अंदर ASP करके एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक पेज चल रहा है. ठीक है, और इधर देखो कोई फोल्डर नहीं दिख रहा. हाँ, और इधर देखो कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है. देखो कोई भी फोल्डर नहीं है, राइट. फोल्डर है क्या, लोकल होस्ट करके एक जगह है और इसके अंदर एक पोर्ट नंबर है. ठीक है, और इसके अंदर from1.html चल रहा है. सो दैट इज इट इज अ सर्वर साइड होस्ट. सो इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, तुम बोल सकते हो इट इज अ लोकल एंड इट इज अ सर्वर, बोल सकते हैं हम लोग, करेक्ट. 8098 is a router. It is not a router, you can say it is a port number. Okay, port number, PORT, port number. मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, रुको. इसमें क्या है देखो, HTTP तो तुमको समझ में आ जाएगा. HTTP क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल, राइट. प्रोटोकॉल. लोकल होस्ट
दैट इज कॉल्ड द होस्ट नेम। ठीक है, तो लोकल होस्ट का कोरस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड द 127.0.0.1, दैट इज आईपी एड्रेस। ठीक है, अच्छा ओके। 8098 इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, from.html, दैट इज योर HTML फाइल। सब कुछ मैं चैट पे शेयर कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो प्लीज नोट कर लो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, that will help for your future actually. Okay, what is that, what is in the first class, second class, third session, fourth session are there, you have to note all those things in a proper manner so that when you revised it, it will be very much helpful to you actually. Okay, okay, so I am just providing one example how to host, means how to run one HTML page in the IIS server. That is a simple example. Okay, in detail हम लोग बाद में इसका डिटेल में we'll cover in the detail. Okay, whenever we are go for the hosting our website. ठीक है, हम लोग पहले क्या सीखेंगे, हम लोग पहले सीखेंगे हाउ टू क्रिएट द वेब पेज, वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो छोटा सा एक समरी देख लेते हैं। ठीक है, समरी ऑफ TOC। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वेब पेजेस। ठीक है, तो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों को प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा चाहिए, बोलो? इंग्लिश सर। इंग्लिश सर। वेब पेज क्रिएट करने के लिए इंग्लिश चाहिए। HTML। यस, HTML। ठीक है, ओके। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एक्स्ट्रा डिजाइन CSS, JavaScript sir। Yes, JavaScript, not sir. JavaScript. No, not C, JavaScript. C, JavaScript is CSS. not for Cascading. Yes, Sorry, cascading style sheet. Cascading Style style sheet. Yes, ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जेएस मतलब क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट साइट, JavaScript. क्लाइंट साइट। Right. ठीक है, क्लाइंट साइड इंटरेक्शन करने के लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, क्लाइंट साइड इंटरेक्शन मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हम लोग। चलो उस पेज को, हाँ उस पेज को ही हम लोग देखते हैं, उस पेज को ही हम लोग देखते हैं जो पेज हम लोग बनाए हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट टाइप बटन, क्लिक, ठीक है, तो हम लोग एक बटन बनाए इधर, देखो HTML में इनपुट टाइप बटन। ठीक है, और उसका वैल्यू में मैंने डाल दिया क्लिक, मतलब एक बटन क्रिएट होगा, प्रिपेयर होगा, और उसका कैप्शन में रहेगा और वैल्यू में रहेगा क्लिक कर। चलो देखते हैं इसको रन करके, हाउ इट लुक्स लाइक। समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, एक बटन है और ये हाइपरलिंक मैंने पहले ही बनाया था। तो बटन में तुम क्लिक करोगे, कुछ हो रहा है क्या, इवेंट हो रहा है, क्लिक इज इवेंट, राइट? मैं इवेंट में क्लिक कर रहा हूँ, बट कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं जब बटन में क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, एक मैसेज आएगा।
समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, उसके लिए तुमको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू क्लिक द बटन यू गेट सम इंटरेक्शन, यू गेट सम इंटरेक्शन, बट इंटरेक्शन किधर होगा, क्लाइंट साइड पे, मतलब ब्राउजर एंड पे ही होगा, सर्वर एंड पे नहीं होगा। ठीक है, सर्वर एंड पे अगर होगा इंटरेक्शन तो उसे सर्वर साइड बन जाएगा, अगर क्लाइंट एंड पे इंटरेक्शन होगा तो क्लाइंट एंड। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे इंटरेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, बोलो, जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, जेएस, हम लोग शॉर्ट नोटेशन में इसको बोलते हैं जेएस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का अगर शॉर्ट नोटेशन कुछ बनाओगे, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट, जेएस का अगर तुम कुछ शॉर्ट फॉर्मेट बनाओगे तो उसके लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, jQuery। ठीक है, तो जेएस अगर बोल सकते हो 10 लाइंस में अगर तुम एक कोड लिखते हो जेएस में, एक कोडिंग करते हो जेएस में, उसका अगर तुम 2 लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या 1 लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसके लिए तुमको jQuery लिखना पड़ेगा, दैट इज अ मोर एडवांस लाइब्रेरी फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। बट jQuery जानने के लिए तुमको जावास्क्रिप्ट पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद तुम jQuery में स्विच कर सकते हो। ठीक है, ओके। सर मतलब तो जैसे जावास्क्रिप्ट में अपन ने 10 लाइंस का कोड लिखा है ना, और उसके बाद मतलब jQuery ये करेगा, मतलब jQuery अपन जैसे सीख चुके, फॉर एग्जांपल सीख उसको चुके तो उसको मिनिमाइज करेगा, उसको मिनिमाइज करेगा, करेक्ट। मतलब दो लाइन में ही बना देगा वो जो हो पूरा कोड सकता है था 2 10 लाइन लाइंस 3 का। लाइन 1 लाइन में हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है। अच्छा। एग्जैक्टली, ठीक है। बट तुमको jQuery जानने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से इनहेरिट होके, मतलब एक्सटेंशन होके jQuery बनता है। ठीक है, तो jQuery और नथिंग, jQuery इज ए कोड को शॉर्ट कर देगा सर वो। शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म, JS lib, इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। Similar ठीक with है, SQL. सॉरी, It is similar with SQL jQuery. SQL नहीं बोल सकते हो, it is a kind of SQL is a different thing, right? SQL is a database related things, okay? Database. Yes. हाँ, it is a database related thing, but jQuery जावास्क्रिप्ट को क्वेरी करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को तुमको क्वेरी करेगा, मतलब तुमको हम लोग देखेंगे, अभी उतना टेंशन मत लो। ठीक है, सिर्फ समझ के रखो, जस्ट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, नो प्रॉब्लम, इसलिए इतना सारा सेशन हम लोग लेंगे, वन बाई वन हम लोग सर काम एसक्यूएल भी करेंगे रहेगा इसमें। इसमें, डेटाबेस का? डेटाबेस का मोंगोडीबी रहेगा, एसक्यूएल नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक सर। ओके। सर जैसे अगर अपन तुम लोगों को जानना जैसे है, हाँ, अगर तुम लोगों को जानना है तो वी कैन गो फॉर द एसक्यूएल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग अच्छा। देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइम्स, कितना टाइम लगता है इसके लिए ऊपर। ठीक है, यस अगर एसक्यूएल लगता है तो हम लोग 1-2 क्लास में एसक्यूएल भी कवर कर सकते हैं, एसक्यूएल इतना टफ नहीं है, हाँ सर, वीक सिंपल में दो लैंग्वेज है। दिन ही क्लास है इसलिए। हाँ, करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो, जेएस लाइब्रेरी हो गया, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग बूटस्ट्रैप में जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप मतलब consistent design for different devices। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। चलो, इसको ही google.com, चलो चलो google.com, चलो मेक माई ट्रिप, अरे छोड़ो यार, अमेज़न लो। ये अमेज़न का पेज दिख रहा है गाइस? यस सर। ओके, तो अभी किस में दिख रहा है, कौन सा विड्थ एंड हाइट में दिख रहा है ये वाला पेज? ये डेस्कटॉप में दिख रहा है, राइट? डेस्कटॉप वर्जन में दिख रहा है, राइट? मतलब लैपटॉप वर्जन में एक्चुअल डिवाइस साइज, एक्चुअल विड्थ एंड हाइट में दिख रहा है, करेक्ट? तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, करने के बाद इधर तो एक ऑप्शन है ये विंडो पे, टोगल डिवाइस इमुलेशन। ठीक है, तो इसका अगर तुम टोगल करोगे ना, क्लिक करोगे इसमें, तो ये मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रेजोल्यूशन में दिख रहा है, 375 एंड 667
There is a height and that is a width. 375 width and 667. तो इसका डिजाइन देखो फट नहीं रहा है ना. डिजाइन इज अ कांस्टेंट, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर. करेक्ट. तो तुम मोबाइल पे देखो या डेस्कटॉप वर्जन में देखो या टैब में देखो, इसको अगर टैब को कर दो, टैब वर्जन अगर करोगे, थोड़ा सा ये कर दो टैब वर्जन के लिए 100%, 75%, 150%, जूम इन जूम आउट. राइट. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लाइक ऑफ टैब. ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर दो, टैब वर्जन में लेके जाओ. ठीक है, देखो साइज इज आईफोन फाइन, राइट? SE में सर जाके. हाँ, आईफोन SE, करेक्ट. इसको कोई भी जगह पर दे दो, आईपैड. ठीक है, पिक्सल 5, ये मोबाइल वर्जन है सब. ठीक है, तो देखो डिजाइन बराबर जा रहा है ना, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिजाइन इज नॉट ब्रेकिंग एक्चुअली, करेक्ट. सो इसके लिए तुमको क्या सीखना पड़ेगा? डिफरेंट डिवाइस पे डिजाइन को कंसिस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, तुमको बूटस्ट्रैप जानना पड़ेगा. ओके, गॉट इट? So that is a use of bootstrap. ठीक है, मतलब तुम वेब पेज एक ही बनाओगे, बट बूटस्ट्रैप जब तुम अप्लाई करोगे ना, तो डिफरेंट डिवाइस पे वो अप्लाई हो जाएगा, कंसिस्टेंट वे में वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया बूटस्ट्रैप. छोटा मोटा इंट्रोडक्शन रहेगा बूटस्ट्रैप का, और तुम कैसे पिक्सल बाय पिक्सल बूटस्ट्रैप को डिजाइन करोगे, इसका हाइट विड्थ कैसे सेट करोगे, कौन सा पिक्सल में लेके जाओगे, एक्सेट्रा, वो तुमको सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो अपना बूटस्ट्रैप हो गया. नेक्स्ट वी हैव टू कम्स विद एंगुलर. ठीक है, तो एंगुलर मतलब एंगुलर इज ए JS फ्रेमवर्क, इट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इट इज ए वास्ट फ्रेमवर्क. ठीक है, तो इसके लिए मेन क्या है एंगुलर में? फॉर द SPA. So Angular is a JavaScript for the single page application. ठीक है, so single page application create करने के लिए we are actually use the Angular or the React, whatever your choice. ठीक है, क्या एग्जांपल दूं तुम लोग एंगुलर के लिए? चलो देखते हैं छोटा सा एग्जांपल, हाउ वी कैन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन. से फॉर एग्जांपल Amazon. ठीक है, तो Amazon में देखो बहुत सारा लिंक है, राइट? देयर आर सो मेनी लिंक्स आर देयर, सो मेनी मेनूज आर देयर इन द पेजेस, करेक्ट? Okay, Yes. so whenever you click that hyperlink, say for example you click that जूता, okay, ठीक से नोटिस करो, जब मैंने जूता में क्लिक किया ना, और सपोज कोई भी प्रोडक्ट में जब मैंने क्लिक किया, तो दूसरा टैब में जाके वो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, राइट? करेक्ट ना? Yes. ओके, अभी देखो पेज पूरा रिफ्रेश हो रहा है. जब तुम क्लिक करते हो ना ये जूता पे, सपोज एक लिंक में मैंने क्लिक किया, तो वो रिंग हो रहा है, देखो रिफ्रेश हो रहा है, देखो होने के बाद पेज लोड हुआ. ठीक है, सो दैट इज नॉट ए सिंगल पेज एप्लीकेशन. ठीक है, मतलब दूसरा पेज में जाकर रिफ्रेश हो रहा है, लोड हो रहा है, उसके बाद खुल रहा है पेज. ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन तुमको क्या बताऊं, सिंगल पेज एप्लीकेशन इज अ काइंड ऑफ जीमेल. जीमेल को तुम बोल सकते हो इट इज एसपी एप्लीकेशन. ठीक है, तो जीमेल में देखो, अगर तुम इनबॉक्स अभी है, सेंट आइटम में मैंने गया, ठीक है, तो देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है क्या? पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है. ठीक है, बट उसके अंदर देखो हैश सेंड करके एक छोटा सा URL क्रिएट होता है. अगर तुम इनबॉक्स में क्लिक करोगे, देखो हैश इनबॉक्स करके क्रिएट हो गया. अगर तुम ड्राफ्ट में क्लिक करोगे, ठीक है, तो हैश ड्राफ्ट. So that is a kind of single page application. So there are no refresh of the different pages. ठीक है, so whenever we create the Angular, so that is one of the advantage of the Angular is called the single page application. We have to create the single page application. Okay.
So as of now, we have to create the HTML. We have to design the HTML with the help of CSS. We have to interact with the HTML button, text box, all those control with the help of JavaScript. ठीक है? JavaScript को shorthand notation में बनाने के लिए we सर have to स्क्रीन create नहीं the. दिख रहा सर. सर स्क्रीन नहीं Oh, दिख रहा sorry. सर. Why this sharing is not working? Why stop सर it? वो summary of वो आप शेयर कर दें टीएस. Sure. I'll share that. Okay. So Bootstrap is for consistent design for the different device pixel, and Angular is used for the JavaScript framework for the creation, making mainly for the SP application. बाद में हम लोग और भी बहुत सारा एडवांटेज है Angular में और React में, whatever, both are the same, similar. ठीक है, सारा एडवांटेज हम लोग देखेंगे जब सीखेंगे, but mainly used for the SPA, single page application. ठीक है, तो ये सब हो गया 1 to 6 up to point 1 to 6. ठीक है, this is your front end. Okay, 1 to 6 point. Now comes into the back end. Back end means server side coding. Server side में क्या आएगा? Server side में we have to learn about the Node.js. ठीक है? Express. Node.js means it is a server side JS. ठीक है? और जब तुम server side JS लिखोगे, अपना मेन टारगेट क्या होगा? You have to create the APIs. APIs you have to create. ठीक है? What APIs? RESTful API. बाद में हम लोग सीखेंगे what is a RESTful API, why it is required, all those things. ठीक है? और हम लोगों को डेटा को स्टोर करने के लिए we have to little bit use of the MongoDB. API stands for application interface. और SQL Server, whatever. ठीक है? SQL Server अगर तुमको सीखना है तो हम लोग को SQL थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा. तो ये हो गया तुम्हारा बैकएंड. ठीक है, तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड मिला के बैकएंड प्लस फ्रंट एंड called the full stack development. ठीक है, so after the course you are getting your expertise into the both the things. That means you are expert into the front end, you are expert into the back end. चलो, मैंने चैट पे सब कुछ दे रहा हूँ. ठीक है, प्लीज नोट इट इन समवेयर इन द वर्ड फाइल or in some other notepad, whatever your, or in your hard copy notebook. Just a minute, huh? Just give me just 1 minute. API stands for application interface. Sir. Yes, application programming interface, correct.
So guys, any doubt, any confusion as of now, or we are good? No doubts. Shova is there? Or you are sleeping? It is already 10:22. Shova? Gaurav Kumar, what about you? Yes, sir. We are good. Gaurav, Sir, can ठीक है you सब कुछ? Yes, sir. sir, can you share your LinkedIn account? What do you do? My LinkedIn account? For future reference. I have no LinkedIn account. Okay, so what about Mohan? Yes. Mohan, any doubt, any confusion? No, sir. Okay, Virender. सर आपने कोई वेबसाइट डिजाइन की होगी वो आप दिखाएंगे सर? नहीं, मेरा website I cannot share into the my website I cannot share into the public domain because it is a totally confidential for the company. Okay. सर लाइक कुछ एग्जांपल सर दिखा देते आप, ऐसा कुछ आपसे सेव होगा सर, वेब पेजेस कुछ डिजाइन किए सर? Who is this? वीरेंद्र। तुमको सीखना पड़ेगा ना how we can design the web page, right? मेरा web page देखे तुम क्या करोगे? मेरा तो बहुत सारा web page है, but all are the confidential for the company use, internal use for the company. Okay. सर डेली क्लास टाइमिंग 8 to 10 ही रहेगा ना? 8 to 10 ही रहेगा। कल का क्लास टाइमिंग में बता देता हूँ लोगों को, क्योंकि कल मेरा एक काम है शायद। 8 to 10। What about 10? हाँ, सैटरडे संडे चलेगी, बट कल तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो क्या? 10 to 12 समथिंग लाइक दैट। Yes, or sir. 11 to 1, whatever you are comfortable. Is in the morning? Morning, sir. Morning, yes. Okay. The morning we are... Only for the tomorrow, because I have some work actually in the 8 to 10 11 time. to 1 is fine. 11 to 1 is fine, na? Okay, all are fine, right? 11 to 1. जी fine. Yes, sir. Everyone, Yes, sir. please give your Yes, sir. confirmation. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, everyone, any of you have any concern? Shobha, Rishketu, No, ma'am. Parvez, Gaurav. Sir is asking you about 11 to 1. If you have any concern, let us know. It shouldn't be like tomorrow you are saying that these timings are not convenient for us. And Radhika ma'am, can you please create a WhatsApp group so that all we can add and that will be easy for us? Yeah, I'll ask the management if it is possible to create a WhatsApp group. But generally, Telegram becomes more convenient, so we don't bother each other in the personal lives. So that's okay. I'll ask the management if it is possible to create the WhatsApp. Okay. And also share the syllabus so that we can know which thing we will. Yeah. For tomorrow, all of you have no issues with the morning time, right? Because this is just a Ganpati festival. Yeah, That's yeah. a bit busy in the evening. So for tomorrow, next weekend onwards, we will have the morning batches. Sorry, evening batches. Evening batches. 10 p.m. to 10 p.m. So shall I create the link for tomorrow 11 a.m.? Yeah, sure. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Great. See you all tomorrow 11. How was the first session? You all are happy? Yeah, ma'am. Yeah. Yes. It was great experience. Thank you, Rana sir. Yeah, thank you all. Have a good Thank day, you, rest sir. of the day, and good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Thanks. Bye. Tomorrow we can meet. Yeah, sure. Chalo, bye.